In this video, I am giving information on beaver rodents, especially the largest rodent in North America and Eurasia, and second largest rodent worldwide. The Eurasian beaver or a European beaver is a species of the beaver that was once widespread in Eurasia but was hunted to the to near extinction for both its fur and castoreum, which is medicinally useful part. And at the turn of the 20th century, only about 1,200 beavers were survived in the 8 relics populations in Europe and Asia. And it has been reintroduced to much of its former range, and now occurs from Spain, Central Europe, and Great Britain to the few regions of the China and Mongolia, and it is listed as the least concern on the IUCN Red List. As it is recovered well in most Europe. Now I will give information on the characteristics. The description is based on the little differences in fur and its color and cranial morphology. And the Eurasian beavers fur color varies between the regions. Light or a chestnut rust is the dominant color in the Belarus beaver, and in Russia's basin it is the predominantly blackish brown, and in the Belarus nature reserve beavers are both brown and blackish brown in color. You see in the video color varies. One is the chestnut, the brown color, and another is the blackish in color appearance. The Eurasian beaver is one of the largest living rodent species and the largest rodent native to the Eurasia, and its head to body length is 80 to 100 centimeter with the 20 to 50 centimeter long tail length, and it weighs around 11 to 30 kilograms, but it generally increases throughout the life, and up to the 50 kgs it may attain weights. And it appears to be the world's second heaviest rodent after the Capybara, and it is slightly larger than the North American beaver, and the Eurasian beaver appears superficially similar to the North American beaver, but there are several important differences, especially in the chromosome. The North American beaver has 40 chromosomes, while the European beaver has 48 chromosomes. And the scientific name of this Eurasian beaver is the Castor, and it belongs to the family Castoridae, and the order Rodentia, and the class is the Mammalia, and is the phylum is the Chordata, and Eurasian beaver is a keystone species, as it supports the ecosystem which it inhabits, and it is also called the ecological area ecosystem engineer, ecologists say, and as it supports the ecosystem which it inhabits, and it creates wetlands which provide habitat for the European water vole and Eurasian otter and Eurasian water shrew, and beavers build dams that trap
sediment and improve the water quality, and recharge groundwater tables, and increase the cover and forest for the trout and the salmon. This is all about the behavior of this beaver rodent and ecology. And now the distribution and habitat, I will briefly give about its habitat. The Eurasian beaver is a recovering from near extinction after redepredation by humans for its fur and castoreum, which is a useful part, medicinal use, and yeah, the secretion of its scent gland believed to have medicinal properties, that is called the castoreum. And so it is over exploited in the past. And in many European nations, the Eurasian beaver became extinct but reintroduced, and protection programs led to the gradual recovery by 2023, and the population is about 639,000 individuals, and about 83% of the Eurasian beavers live in the former Soviet Union due to the reintroduction. And Eurasian beavers was once widespread in the Europe and Asia, but by beginning of the 20th century, both numbers and range of the species have been drastically diminished and declined. And in 2008, the IUCN granted the Eurasian beaver status of the least concern, with justification that the species has recovered sufficiently with the help of the global conservation programs. And currently, the largest number can be found across the Europe, where reintroductions have been successful in 25 countries. And conservation efforts are ongoing. However, the populations in Asia remain small and fragmented and are under considerable threat. उद्बिलाव कृंतक, जिसका कि वैज्ञानिक नाम यानी कि द्विनाम पद्धति में जो है कैस्टर फेवर है, यह उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के मूल निवासी उभयचर कृंतकों की दो प्रजातियों में से एक है। जैसे कि मैंने पिछले उसमें ऊटर बताया, उसको उद्बुलाव कहते हैं, लेकिन ये जो है इसके साथ कृंतक और जुड़ा गया, यानी रोडेंट से जो है इसमें रोडेंट इसका जो फैमिली भी अलग है, कैस्टोराइडी, जबकि उसके ल्यूटर नहीं है और ये उससे डिफरेंट है, लेकिन इसको भी उद्बुलाव कृंतक के नाम से जाना जाता है कि जो रोडेंट्स का इसमें मेन गुण होता है, जबकि उसमें जो है वो भी एम्फीबियस होता है, मतलब सेम एक्वाटिक है, लेकिन ये एम्फीबियस ये भी है एनिमल्स, लेकिन इसमें टिपिकल जो है रोडेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं और इसके जो फैमिली कैस्टोरिडी है। और इसमें ये बीवर जो है उभयचर कृंतकों की दो प्रजातियों में से एक है। उभयचर मीन्स एम्फीबियस, दोनों पानी में भी जाता है और ये पानी से बाहर भी रहता है, और ये जो है दुनिया भर में दूसरे सबसे बड़े कृंतक है। पहले सैपर वेरिया है, और इनका शरीर जो है 80 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और आमतौर पर वज़न इनका 16 से 30 किलोग्राम होता है। हालांकि उद्बुलाव जीवन भर बढ़ते रहते हैं, और उद्बुलाव कृंतक यहाँ पे मैं ये कहूँगा, और इनका वजन 50 किलोग्राम से भी अधिक हो सकता है।
इनके विशेष पहचान ये कि विशेष पूंछ पपड़ीदार और चपटी और चप्पू के आकार की होती है इनकी पूंछ। और क्योंकि ये पानी में ज़्यादातर जाते हैं, अपने उसमें रहते हैं और पानी के डैम बनाते हैं ये, और वेटलैंड्स का भी निर्माण करते हैं। और ये इतना मेहनती होने के बावजूद भी लोग इसको, क्योंकि कभी कभी किसानों की फसल को ख़राब कर, तो वो कहते हैं इसको कि भाई ये ज़रा विध्वंसक है। वैसे ये देखा जाए तो इकोलॉजिस्ट लोग यानी कि पारिस्थितिकी वाले इसको तो कहते हैं इकोसिस्टम इंजीनियर की संज्ञा इसको दी गई है। ये जलधाराओं, नदियों, दलदलों और तालाबों और बड़ी झीलों के तट पर रहते हुए उदबिलाव शाखाओं और पत्थरों और मिट्टी से बांध बनाते हैं, जिससे तालाब बनते हैं, जो अक्सर अ, कई हेक्टेयर तक फैले होते हैं। और पारिस्थितिकी विज्ञान वैज्ञानिक इनको अक्सर जो है बीवर को पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियर के रूप में जो है संदर्भित करते हैं। यानी कि ये जो है वो इस तरह से डैम का निर्माण करते हैं जिससे कई वेटलैंड बन जाते हैं, क्योंकि वे जिस परिदृश्य में रहते हैं उसे बदलने की वो क्षमता वो रखते हैं ये बीवर। और बीवर के पैर छोटे और मजबूत शरीर, पैर छोटे होते हैं और मजबूत शरीर के साथ इसका छोटा चौड़ा और क्या है, कुंद सिर होता है। और फर में भूरे रंग की जो है छोटी महीन एक घनी परत होती है, जो कि वो शरीर में पानी को त्वचा तक पहुंचने से रोकती है। और इस परत के ऊपर जो है लंबे मोटे चमकदार गार्ड बाल होते हैं, जिनका रंग पीले भूरे रंग से लाल भूरे और काले तक होता है। और दोनों लिंगों यानी कि मेल फीमेल में जो है इनकी जो है अड़ेड़ी ग्रंथियां जो कि मांसल स्राव को बाहर निकालती हैं, जिसके लिए इसका पहले पहले दोहन होता था कैस्टोरियम को। तो ये क्या है, दोनों लिंगों में अड़ेड़ी ग्रंथियां होती हैं इनमें।